लोग बाग पूछना चाह रहे हैं और बहुत से लोग आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो लेट मी जॉइन हैंड्स विद देम। थैंक यू सो मच। हम सभी आपके लिए आभारी हैं जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में बताया। नाउ आवर नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर जुनैद खान। Junaid Khan is the alumni of State Council of Unani Medicine, West Bengal, and he passed out during the year 1985. And he is also holding very responsible positions. He is the president, J&Z Educational and Charitable Trust, Bangalore, founder and CEO of Hijama Wellness Center, Bangalore, MD of Shuddh Healthcare Products Manufacturing, Bangalore, and he is a resource person, Hijama Education and Research Training. He is Vice President in Saviors of Democracy Society, Bangalore. He is Vice President of Karnataka chapter in International Naturopathy Organization, and Founder President of International Federation of Holistic Practitioners, Advisory Council member of St. Mother Teresa Virtual University for Peace and Education, and advisory member of Indian Fight for Justice, Mumbai. So he is a very active and very talented person, and he is highly generous. He has been organizing free camps, free treatment camps, and in several cities and cities of India and across the country also. So I now request Dr. Junaid Khan to kindly deliver his lecture, and I am sorry I have to say once again to you, kindly try to be within the limits of time. नमस्ते, मैं एकी-जान साहब का आभारी हूं जिन्होंने मौका दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का और हिजामा के प्रति चंद अल्फाज आपको मैं बताऊं। इससे पहले मैं डॉक्टर रूमी सर की बात सुनी और डॉक्टर लोहिया साहब की बात सुनी। मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसे लीजेंड्स को बार बार सुनने का मौका आता रहे, और मैं एकी-जान साहब को गुजारिश करूंगा कि ऐसे मौके बार बार लेकर आएं। तो हम आगे बढ़ते हैं हिजामा के प्रति बात करने के लिए। इसके साथ मुझे जो है थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको। हिजामा एक ऐसी चीज है जो सदियों से चल रही है। बहुत पुरानी चिकित्सा है ये, पर अनफॉर्चुनेटली इसको सही तरीके से कोई कर नहीं रहा है। हम आज बात करने वाले हैं हिजामा के ऊपर। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना कि हम क्रिएटर जो भगवान है उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबको इल्म दे, नॉलेज दे, जो सारे ह्यूमन काइंड को जो है बेनिफिट हो, और हम सबको ऐसी एक पैशन से साथ सर्व करने की इच्छा दे। हिजामा के साथ हमको जो सीखना है आज वो है उसका माना क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और ट्रीटमेंट का एडवांस क्या हुआ है। आई एम श्योर डॉक्टर आलोक त्रिवेदी विल गिव मी हाफ एन आवर एज प्रॉमिस्ड, और मैं कोशिश करूंगा और मैं उस वक्त के अंदर जो है मेरी बात को खत्म करूंगा। मीनिंग ऑफ हिजामा अगर हम गूगल में देखते हैं तो वो बताता है सकी। ये ऐसा नहीं है। मीनिंग ऑफ हिजामा जो है, हिजामा का माना जो है ब्रिंग बैक टू नॉर्मल है। ब्रिंग बैक टू नॉर्मल है।
सर अभी मेरा चेहरा सही है? यस सर। क्योंकि जब मैं पीपीटी डाला था माय फेस वाज नॉट क्लियर। सर नाउ यू आर विजिबल। ऑलराइट, सो बहरहाल बीच बीच में मैं पीपीटी का इस्तेमाल करूंगा। मीनिंग ऑफ हिजामा जो है गूगल में सकिंग बताते हैं और एक्चुअली सकिंग नहीं है। दैट मीन्स ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। सही माना जो है ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। मतलब जब ब्रिंग बैक टू नॉर्मल की बात होती है, अबनॉर्मल को नॉर्मल करते हैं। व्हाट हैज बिकम अबनॉर्मल हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हिजामा। हिजामा एक अरबिक वर्ड है। दूसरा छोटा सा माना आता है टू गेट इनटू शेप, यानी कि जो मरीज है, जो बीमार है, जो पेशेंट है, वी आर गेटिंग बैक हिम टू हेल्थ, उसका माना है हिजामा। और लास्ट में आता है सकिंग, जो नॉर्मली आप देखते होंगे, लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे, जिसमें जो है कप को लगाया जाता है थ्रू वे ऑफ सकिंग और वैक्यूम क्रिएट होता है एंड उसको स्कार करेंगे या उसको जो है थोड़ा सा इंसिशन करेंगे और उससे हम खून निकालेंगे। और ये कौन सा खून हम निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट जो हो रहा है, जो पहले कैसा हुआ करता था अभी कैसा हो रहा है, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो है हिजामा को लेकर जो है आगे आए हैं। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में इसको कैसा किया जाता था, आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पीपीटी अगेन। ये आप देख लीजिए, मेरा चेहरा आ रहा है, लाइट ऑफ करो। और वो भी नहीं, लाइट ऑन करो। ये जो है आप जो पीपीटी पर देख रहे हैं, the first slide you saw was the stone markings in Egypt, and next page you saw was from book called Ibris Papyrus. Ibris Papyrus एक मेडिकल डिक्शनरी है जो 1550 BC में लिखी हुई है। So the treatment of hijama was available at 1550 BC. BC मतलब before Christ. And you can see the stone slabs, which I just now showed you, the PPT, wherein the structure of a patient sitting and the equipments of hijama, namely the cup and the razor, is available. Then later on, as time went by, lot of improvement happened and we got lot of cups of various modes. जैसा ब्रास का कप था, मेरा चेहरा बाद में आएगा, अभी सही है। तो these are the cups available throughout the history. थोड़े बहुत ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं, थोड़े बहुत जर्मनी के म्यूजियम में रखे हैं, थोड़े बहुत इजिप्ट के म्यूजियम में भी आपको दिखेंगे। These are the cow horns, जिससे हिजामा भी हुआ करता था। These are copper horns and to the right side you can see the cow horn. ये नीचे वाला जो है आपको ब्रिटिश काउंसिल में मिलेगा, ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगा। हिजामा जो है
is easily done to the aged as well as to the younger children as well. अभी इसको हिजामा को कपिंग थेरेपी बताते हैं, जैसा एंशिएंट इजिप्शियन है, चाइनीज है, ग्रीक है, अरेबिक है, प्रोफेटिक मेडिसिन से भी है, यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में भी आपको मिलेगा. I would like to show you one of the result from our institute. The Institute of Hijama Education and Research Training है, जहां पे हिजामा के ऊपर रिसर्च भी हो रहा है. The left side is before hijama and the right side का slide जो है after hijama है. This is what the blood looks like after extraction. And खून का निकालना बदन से ये आयुर्वेदा में भी है. You people can have a look at the slide. जैसा इसको रक्त मोक्षा बोलते हैं. रक्त मोक्षा यानी कि सैल्वेशन, खून निकालने से बेहतर होना. और ये तो था हमारा थोड़ा सा स्लाइड का हेल्प, जिससे आप इसको समझ सकते हैं. एक बड़ा सब्जेक्ट है. एक जैन साहब मुझे जो है हाफ एन आवर दिए हैं बात करने के लिए. मिनिमम मेरा लेक्चर जो है 3 घंटे का होता है, तो आई एम ट्राइंग टू कंसाइज दैट इनटू हाफ एन आवर एंड मेक श्योर दिस सब्जेक्ट इज नोन टू एवरीवन. I am sure all the participants, majorly of our acupuncturist and acupressurist. I request all the participants to learn hijama not for 2 days. Please do not learn this treatment who is offering for 2 days. You cannot learn. It is impossible to learn this wonderful treatment in 2 days. You cannot. Not even MBBS doctors do not entertain 2 days program. Introduction ले सकते हैं, but इसको सीखने के लिए at least I request you to spend 6 days. 6 दिन लगाएंगे आप, जब भी इसको आप सीख पाएंगे. My agenda, since the time I've understood, is to make sure that a non-medico cannot be taught हिजामा इन 2 days. जैसा मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर का. एवरी पति इज हैंडीकैप्ड. एवरी पति, any pati you take in this world is handicapped. That is the reason I always say take a holistic approach. इस पति में क्या नहीं हो रहा है, आप दूसरे पति को इन्वॉल्व कीजिए. जैसा हमारे पास जो है ढेर सारे पतिज हैं. You can involve any kind of line of treatment. डॉक्टर आलोक से मेरी निवेदन है कि अगर 30 मिनट हो जाते हैं, मुझे जरा हेड्स अप दे दीजिए, मैं बंद कर देता हूं. या 25 मिनट के बाद मुझे जो है बता दीजिए. आई विल क्लोज माय लेक्चर. ओके डॉक्टर आलोक साहब. ऑलराइट. So as I was telling you, every pati is handicapped. That is the reason we need to take a holistic approach. Very simple, very, very easy.
you can involve, जैसा डॉक्टर लोही साहब ने बताया है, majority of the patients you get is for pain relieving. Hijama is one of the best pain reliever. It is drugless and it is evidence based. We only remove the peripheral blood. The blood which we remove is a disease causative blood. When we remove the disease causative blood, we not only treat and cure the patient, we also help the patient for any futuristic illnesses. Pathogen is directly removed from the body through hijama. The blood which we remove is not only full of toxic, it is also filled of waste gases, waste nutrients, and pathogenic blood. I'm sure everybody must have looked how hijama helps in removing the blood. We use a sterilized surgical blade to do the incisions. We make sure we have an aseptic conditions when we have the patient in the secured area. That is the treatment room. We call that as a secured area. And it so happens, as I told you, this kind of treatment is coming way down from 1550 BC. Till date, there is no evidence of any side effect on any patient. Till date, we have had wonderful results. My number is available with Dr. Acu-Con Sahab. You can take down from him. You can get in touch with me. I can forward you videos where we have treated innumerable patients. Presently, our institute is doing research on diabetes. How hijama can help reverse diabetes. We are still in research. Give me few more years. They will come back with foolproof treatment plan to reverse diabetes through hijama. How we got ahead, and we should be thankful to Chinese people who gave us wonderful equipments. Today it is easier. Nahi ho to we need to suck through our mouth. I'm sure all the participants is also aware of Alu treatment. Alu treatment is what India was famous for. Alu treatment, the evidence is available in the Indus Valley civilization. Alu treatment is nothing but, again, removing of the blood from the human body through pumpkin. We Indians used to remove the peripheral blood of the body from the body through a pumpkin. From there on, all the equipments which are available now have been discovered, invented, and used now. Hijama throughout the years have been in various countries. Hippocrates was a brand ambassador to hijama, who is also known as the father of modern medicine. Ibn Sina was also a brand ambassador to hijama.
Hijama is a part of Unani curriculum. Unani believes in the four humors of the human body as Ayurveda. The bad blood, which is the real cause of the human body diseases. And where is this bad blood? As Dr. Loya stated, arteries, veins, then arterioles, then capillaries, then veins, then venules, then capillaries. The unwanted blood, or the blood which is not required by the circulation system of the human body, is thrown out. Where does it go? Where does it stay? It stays underneath your skin, above your muscle. That is the place where we remove the blood from. Everyone whom I have met, they have always asked, how am I sure? Or how are you sure कि आपने जो है गंदा खून ही निकाला है, फासिद खून ही निकाला है? To a medical background person, I can explain to him, he understands. But a non-medico, it is impossible for them to understand because they don't understand the concept of the blood circulation system in the human body. Once you understand how the blood circulates in the human body and how the system for the waste in the blood is removed out, filtered, and kept aside, for him it is very easy to understand. Hijama only removes the bad blood. It is the blood which causes diseases in human body, and that is what the blood we remove. And how do we remove it? I have seen a lot of patients coming with marks on the body, with huge cuts. No, you don't need to tear the muscle to remove blood. Our incision training teaches you only to cut 0.05 mm. Sir, kindly summarize. We have certain questions also, if you can just. Thank you very much, Dr. Alok Sahab. I can only tell you to take back is, do not learn from people, from trainers who are only looking to take money from you. Learn from professionals, learn from people who can really train you how to do the incision. कप लगाना बहुत आसान है, मगर इसको incision करके जो खून निकालना है वही आपकी methodology होगी. That is what you need to learn. Thank you, Dr. Alok Sahab. Thank you so much, sir. You have given us a very, very important science to us, and very nicely explained also. और बहुत अच्छा रिस्पांस है सर. काफी लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि इसका हिजामा का स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इन किस तरह की बीमारियों में किया जा सकता है, या फिर सारी बीमारियों में है. As you told that this is a kind of it maintains the homeostasis in the body. So I think कि अगर आप थोड़ा सा इस पे और लाइट डालना चाहें कि what is the scope of hijama? Like can it be used for any kind of a disease or ailment? Yes, sir. Majority of the diseases to the humankind presently available now is from the blood. Blood is the causative effect of diseases in the human body. Anywhere you go, to any doctor for that matter, he always asks you for a blood report test. खून से ही तो पता चलता है आपको क्या है क्या नहीं है.
और क्या स्केल, क्या मार्कर आपका ज्यादा हुआ है या क्या आपके पास कम हुआ है. So 99.99% of all the major diseases can be used and treated by Hijama. एक यूज ब्लेड लेकर आइए. सर दूसरा एक क्वेश्चन ये है कई लोगों का, दे वांट टू नो वेयर फ्रॉम दे कैन लर्न हिजामा, द ऑथेंटिक सोर्स, एंड जैसे आपने बताया कि एटलीस्ट 6 days आर रिक्वायर्ड टू लर्न हिजामा, तो does it I mean include the theory and practical also, or some other time is required for theory and practical as well? इसके कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए सर. सर पहले चीज मैं आपको बताऊंगा, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड फॉर ट्रेनिंग प्लीज गेट इन टच विद डॉक्टर A.K. Jain साहब. वी हैड डन अ वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ फायर कपिंग ऑफ 1 day. कि फायर कपिंग आप एक दिन में सीख सकते हैं, बट हिजामा को यानी कि खून को निकालने के लिए आपको एक दिन नहीं होगा और 2 दिन भी नहीं होगा. देयर वाज अ मैसेज ब्लेड दिखाने के लिए. दिस इज द सर्जिकल ब्लेड वी यूज सर. ओके जी जी. Thank you so much, sir. It was really a delight to have you here, Dr. Juned, and मुझे तो ये इत्तेफाक मिला है कि आपसे रूबरू मुझे फिजिकली आपसे मिला हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका फायर कपिंग वाला सेशन एंड द अदर सेशंस आल्सो. सो we'll definitely like to have some more interaction with you. बहुत अच्छा रिस्पांस है आपके इस हिजामा के लिए, तो लेट अस सी हम आपसे कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं. वील ऑर्गेनाइज. सर रिक्वेस्ट है लास्ट, पीपल हैव सेंडिंग मी मैसेजेस फॉर हैविंग अ डेमो. मेरा नंबर नोट कर लीजिए. I can send you the videos, but I would ask you to please get in touch with Dr. A.K. Jain साहब for further classes in Indore or any other place. मेरा नंबर है 98868 22737 98868 22737. मेरा चैट में भी डाला हूं नंबर, आप देख लीजिए. और मैं आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं डॉक्टर A.K. Jain साहब का एंड ऑल द पीपल हु हैव कम टुगेदर टू मेक दिस प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच सर. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. गुजारिश ये है कि आप ऐसा प्रोग्राम करते रहिए. थैंक यू डॉक्टर जुनैद सर. आपने बहुत अच्छे से बताया और काफी अच्छा उसका रिस्पांस आया, एंड वी आर ऑल हैप्पी. और विल डेफिनेटली जो आपका ये मुहिम है इसको और आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. तो नाउ कमिंग टू